Welcome to the series of DI. I will discuss about another DI of radar graph. Hope you know the concept of radar graphs. So let's jump into the topic. I will not discuss about the graph system, rather I will just jump into the question about the radar graph. Hope you will understand it. So this is a radar graph. The directions are the given radar graph shows the average number of people who reading Hindustan Times and Indian Express in 5 different cities, that is Mumbai, Bangalore, Chennai, Pune and Delhi on Sunday, and also given that the number of people reading Hindustan Times in 5 different cities. Okay, so average number of people reading Hindustan Times and Indian Express represented by this blue line. So in radar graph we know that this number represents this outer line. This outer line represents 400, and this line, second line, represents 350. Third outer line represents 300. Fourth outer line represents 250. This is 200. This is 150. This is 100. And this is 50. Okay, so the number of people reading Hindustan Times is given by the red dots or the red lines, and the number of people reading the Hindustan Times and Indian Express averagely is given by the blue line. So पहले ये देख लेते, find the ratio of the number of people who reading Indian Express in Mumbai and Chennai together, and the number of people who reading Hindustan Times and in Bangalore and Pune together. So Indian Express in Mumbai and Chennai together, पहले इसको देख लेते हैं. Indian Express in Mumbai and Chennai together. Number of people. What is the number of people who are reading Indian Express in Mumbai and Chennai together? सो मुंबई में कितने सारे लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं. सो इंडियन एक्सप्रेस का डायरेक्ट जो वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना है, लेकिन ये हिंदुस्तान टाइम्स का दिया हुआ है. हिंदुस्तान टाइम्स इन बैंगलोर एंड पुणे, पहले उसको निकाल लेते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स इन बैंगलोर एंड पुणे. बैंगलोर में हिंदुस्तान टाइम्स है ये 400, 350, then 300, and पुणे में हिंदुस्तान टाइम्स है 400, 350, 300, 250, 200, 150, 150. This is 450 people. So ये निकल गया है, and इंडियन एक्सप्रेस का निकालना पड़ेगा. So मुंबई एंड चेन्नई, पहले मुंबई में देख लेते हैं. तो मुंबई में 350 लोग हैं जो वो एवरेजली हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल टोटल इन मुंबई कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, वो है 350 इंटू 2, दैट इज़ 700. बट द नंबर ऑफ पीपल in Mumbai who are reading Hindustan Times is 250. So number of people in Indian Express in Mumbai is 700 minus 250 is equal to 450. Okay,
ऐसे ही चेन्नई में ये कौन सा निकल गया, मुंबई निकल गया। चेन्नई में द नंबर ऑफ एवरेज पीपल हु आर रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस इज 400, 350 and 300. So total in Chennai is 600, but Hindustan Times is 400, 350, sorry, Hindustan Times in Chennai is 350. So Indian Express in Chennai is 600 minus 350, 250. So Indian Express in Mumbai and Chennai together, ये मुंबई का है, ये चेन्नई का डेटा है. So together is 450 plus 250 is equal to 700. So the ratio is 700, ये 700 and ये 450 का रेशियो निकलना है. So 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 14:9. So option A is the correct option. The second question is the number of people who reading Hindustan Times and the Indian Express in Bangalore is what percent more or less than the number of people who reading Hindustan Times in Chennai and Pune together. So Hindustan Times in Indian Express, Hindustan Times and the Indian Express in Bangalore. Bangalore में Hindustan Times and Indian Express कितने लोग पढ़ रहे हैं वो देखना है पहले. So average number of people who are reading Hindustan Times and Indian Express in Bangalore is 400. This is 400. So the total number of people who are reading Indian Express and Hindustan Times in Bangalore, it is 400 multiplied by 2, that is 800. This 800 is what percent more or less the number of people reading Hindustan Times in Chennai and Pune together. Okay, Chennai and Pune देखते हैं. Hindustan Times, Chennai Hindustan Times is 400, 350 and Pune Hindustan Times is 400. इसको लिख लेते, इसको 350 और ये है 400, 350, 300, 250, 200, 150. So 350 and 150, 350 and 150 is 500. Okay, so Chennai and Pune Hindustan Times is 500. The question is asking this number is what percent more or less this number. Clearly it is more. 500 से 800 ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 800 minus 500, that is 300. This 300, this is 300 more than 500. So the percentage wise this is 300 more than 500. That is how much percentage more? 3/5. 60%. This is 60% more. This is 60% more. This is the answer. Okay, next question में जाते हैं. If the number of people who reading Hindustan Times in Pune and Hyderabad is 20% more than the number of people who reading the Indian Express in Mumbai, and out of the number of people who reading Hindustan Times in Hyderabad, 33 or 1/3% are females, and the number of people who reading Hindustan Times
in Hyderabad are males. Then they find the number of people who reading Hindustan Times in Hyderabad are males. Okay, if the number of people who reading Hindustan Times in Pune and Hyderabad is 20% more than the number of people who reading the Indian Express in Mumbai. Okay, Indian Express in Mumbai पहले निकाल लेते हैं इसको. मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं. सो मुंबई में टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, the two newspapers, Hindustan Times and Indian Express are, and this is the average is 350. So the total number of is in Mumbai total number is 350 into 2, 700. But in Mumbai हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाला लोग कितने हैं, 250 है. सो 700 minus 250 is in मुंबई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोग, ये है 450 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं मुंबई में. So the question is saying the number of people who are reading in Hindustan Times in Pune and Hyderabad. So पुणे में कितने सारे लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, ये है दिस नंबर 400, 350, 300, 250, 200, ये 150 है. 150 लोग पढ़ रहे हैं. लेकिन हैदराबाद का कोई डेटा इधर नहीं है. देयर इज़ नो डेटा गिवन अबाउट हैदराबाद. So there is no given data about Hyderabad, but Pune and Hyderabad मिल के कितना है वो हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? It is clearly given in Hyderabad. It is in Pune it is 150 हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले. So in पुणे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 150. बट ये जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोग मुंबई में है, इससे 20% ज़्यादा है पुणे और हैदराबाद मिला के. सो हिंदुस्तान टाइम्स इन पुणे प्लस हैदराबाद इज़ 450 प्लस 450 का 20% कितना है, 1/5 ऑफ 20% ऑफ 450 कितना होता है, 1/5. So this is 1/5 of 450, that is 90. So this is 450 plus 90 is 540. But in Pune हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले लोग हैं 150. So the rest number is from Hyderabad. So Hindustan Times from Pune and Hyderabad is 540. Hindustan Times from Pune is 150. So the number of people in Hyderabad Hindustan Times is 540. 150 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 390.
Hindustan Times from Hyderabad is 390. But the question is saying who reading the people who reading Hindustan Times in Hyderabad is 333.3, that is 33 whole 1/3% are females. So हमें ये पता है कि 33 whole 1/3%, ये आपको पता होना चाहिए कि 33 whole 1/3% is 1/3 in ratio. This percent in ratio form is 1/3. So ये कैसे होता है, अगर ये आपको पता नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, तो कोई दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे ये टॉपिक, परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज़ 1/3. So who reading Hindustan Times in Hyderabad, 33 whole 1/3% are female. So this is total number, and 1/3 is female, that is female is 130 females are reading Hindustan Times from Hyderabad. So the बाकी जो है वो मेल है. So 390 से 130 माइनस कर लेते हैं, 260 और मेल 260 आर मेल्स. सो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स इन हैदराबाद आर मेल्स, फाइंड द नंबर. So 260 is the answer. Hope you understood the topic. So let's okay. Fourth question, it is saying find the average number of people who reading Indian Express in Bangalore, Chennai and Delhi together. Bangalore, Chennai and Delhi. So ये तो आसान क्वेश्चन है. बैंगलोर, चेन्नई एंड दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस. तो बैंगलोर में टोटल कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज है 400. सो टोटल है बैंगलोर में 800. टोटल मतलब जो हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही पढ़ते हैं वो है 800 बैंगलोर में. और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले हैं 350, ये 300. सो माइनस कर लेते हैं इसको, 500 ये बैंगलोर से निकल गया है. वैसे ही चेन्नई से निकलना है. ये 300, 350, 300 300 इंटू 2 दैट इज़ 600 टोटल है. और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले हैं 350, इसको माइनस कर देते हैं 250. ये है चेन्नई से जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं. और दिल्ली से ये है 350 इंटू 2 दैट इज़ 700. 700 से 400 माइनस कर लेते हैं, दैट इज़ 300. ये है दिल्ली से. सो 500, 500, 300, 800, 500 and 300, 800 and 250, that is 1050. ये है टोटल नंबर ऑफ पीपल who read Indian Express
from these cities. One, सो इसका एवरेज निकलना है. एवरेज कितना होगा 1050/3 350. दिस इज आंसर. काफ़ी इजी क्वेश्चन था. फाइंड द नंबर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस इन दिल्ली एंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस इन चेन्नई एंड पुणे टुगेदर. ओके. हिंदुस्तान टाइम्स and Indian Express in Delhi और क्या है and the number of people who reading Indian Express in Chennai and Pune. Okay, Indian Express in Chennai plus Pune, ये दोनों का डिफरेंस निकलना है. हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली में एवरेज नंबर ऑफ पीपल है 350 जो दोनों ही पढ़ रहे हैं. सो टोटल नंबर इज़ 350 into 2, that is 700. एंड चेन्नई और पुणे से इंडियन एक्सप्रेस निकलना है. चेन्नई एंड पुणे. सो चेन्नई में टोटल नंबर है, चेन्नई से टोटल नंबर है 600. ये ब्लू वाला लाइन जो टोटल एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 600 निकल रहा है. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस इज 600 एंड हु आर रीडिंग ओनली हिंदुस्तान टाइम्स इज़ 350. इसको माइनस कर देते हैं 250. चेन्नई एंड पुणे में भी इसको निकालना है. ये 250 निकल गया पहले, और पुणे से ये है 400 350 300 250. 250 into 2 इज़ 500. 500 से ये रेड वाला लाइन निकलना है, माइनस करना है इसको 150. सो ये हो जाएगा 350. ये दोनों का एडिशन करना है. सो इन फ्रॉम चेन्नई एंड पुणे इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम चेन्नई एंड पुणे it is 350 plus 250 600. So the difference is 700 minus 600 is 100. Answer. This is the right answer. Okay, I hope you understood the topic and the question also. If you have any doubt about the paragraph and about these questions, let me know in comment section. I will discuss in another video. Thank you.